Hello everyone, a very warm welcome to Novation. I'm Shantanu and I welcome you all to the second part of our January 2021 current affairs session. Friends, generally हम second part month end में करते हैं practice, but this time since tomorrow is IIFT 2021, इसलिए ये second part एक short part होगा from 16th of January to 23rd January. इन दिनों के इसमें क्वेश्चंस होंगे. ऑलराइट, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को पूरा देखिए और जो एंड में असाइनमेंट क्वेश्चन होगा उसको भी आप अटेम्प्ट करिएगा. ऑलराइट, सो एज ऑलवेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन एनी ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन. साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ novation.in को विजिट कीजिए. वहाँ पे आप वीडियो के PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ कई सारे क्विजेज दे सकते हैं, और अगर आपको नोवेशन का कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो आप नोवेशन को सपोर्ट कर सकते हैं. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो विद दैट आई स्टार्ट टुडेज सेशन. So first, name India's first railway station with a green building certification. So friends, ये certification क्या होता है हम बात करेंगे. हमारा आंसर यहाँ पर है C, केवड़िया स्टेशन. Alright. So Kevadia is the home to the Statue of Unity in Gujarat, which is dedicated to Vallabhbhai Patel. Alright. And since the name, as the name suggests, green building, so this railway station is authorized or has the certification of being very much environmental friendly. How? So you can see that there are all the lights are in LED. Then we have star rated and branded electrical appliances all over the railway station, and there is water management facility, etc. So that's why it has a green building certification. First ever railway station to have that. Also, there is an art gallery in this Kevadia station. Next, we have US President Joe Biden was sworn in as the dash president of United States. हमें बताना है फ्रेंड कौन से president हैं वो. So here the correct answer is B, 46th president of the USA. And 45th कौन थे फ्रेंड? 45th was Donald Trump before Biden. Okay. And so we all know that Indian origin Kamala Harris is the vice president, and she is the 49th vice president of the United States. Next, which of these banks has tied up with Neo, a fintech company? So friends, very important business awareness question. अगर आपको business related questions और practice करने हैं तो आप business awareness की playlist check कर सकते हैं. Okay, आप YouTube पे अगर search करेंगे business awareness तो business awareness by Novation तो आपको वो playlist मिल जाएगी. साथ ही साथ उसकी link मैं comments description box में भी डालूंगा और आपको top right corner पर भी वो मिल जाएगा. So here the correct answer is A, ICICI Bank. So let's see the PTN. So this partnership is to make this card, ICICI Bank Neo Bharat Payroll Card. Now this will be given or only those who are working in MSME sector, that is medium, small and micro enterprise companies. Those employees can avail this benefit, this card, and they can receive a fund of up to 1 lakh rupees through this card. Okay. Next, name the awareness campaign launched by Petroleum and Natural Gas Ministry to spread awareness about green and clean energy. Friends, here the correct answer is C, Saksham. This is the name of the campaign. So let's see what it is. This campaign is going to spread awareness about moving toward a gas-based economy, cleaner use of fossil fuels, greater reliance on domestic sources to drive biofuels, and increased use of electric vehicles. So in all, कैसे हम हमारे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं थ्रू ग्रीन एंड क्लीन हैबिट्स. मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द नेक्स्ट G7 समिट इन जून 2021? फ्रेंड्स, हियर माय करेक्ट आंसर इज बी, यूनाइटेड किंगडम. ओके, सो यूनाइटेड किंगडम इज गोइंग टू होस्ट इट इन कॉर्नेल किंगडम. So let's see the PTN. Now the United Kingdom Prime Minister Mr. Boris Johnson has invited our Prime Minister Narendra Modi to attend this G7 summit. In the previous summit also France invited India, and along with India, Australia and South Korea are also invited to be as guest countries in the summit. And G7 nation कौन से हैं? US, UK, France, Germany, Italy, Canada and Japan. So ये नाम आप ज़रूर याद करिएगा. Next, who among the following personalities was unanimously appointed as the new chairman of the Somnath Temple Trust of Gujarat? So friends, another important question. Here the correct answer is C, Narendra Modi, the Prime Minister of India. So Somnath Temple is believed to be the first among the 12 Jyotirling shrines of Lord Shiva.
So it's a very important temple. Then Prime Minister Modi has become the second Prime Minister ever in India to hold this post after the former Prime Minister Morarji Desai. So Morarji Desai was the first PM to ever hold this post. Then Prime Minister Modi is the second Prime Minister. Next, India and which of the following countries has recently signed a pact to promote the movement of skilled workers from India to that country. So किस कंट्री ने ये पैक्ट साइन किया है जिससे स्किल्ड वर्कर्स इंडिया से उस कंट्री में आसानी से मूव कर सकते हैं? Here the correct answer is B, Japan. So let's see what this pact is. So the memorandum of cooperation covers 14 category of specified skills. So अगर कोई person है and he is having any of those 14 skills out of these 14 categories, then that worker from India, if he meets the skill requirement and has the knowledge of Japanese language test, if he passes that test, he would be eligible for employment in Japan on a contractual basis. So उसको easily वहाँ पर contract job मिल सकता है. आगे बढ़ते हैं. Next is, in which of the following countries has the Google Play Store begun to remove money lending apps that do not comply with country's banking regulator? So friends, here the correct answer is D, India. India का banking regulator कौन है? It is Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India directed Google Play Store that money lending apps which do not comply with RBI's regulation should be removed. So a total of 30 online lending apps have been removed from Google Play Store. For example, Lazy Pay, Cash Guru, 10-minute loan and many other such lending apps have been removed because RBI red flagged them and told Google Play that you should remove them. Moving forward, next is, which of these teams retained the Border Gavaskar Trophy? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस स्पोर्ट में दिया जाता है. सो दिट इज गिवन इन क्रिकेट. अगर आपको और कप्स एंड ट्रॉफीज़ के बारे में जानना है तो आप जो लास्ट टाइम मैंने कप्स एंड ट्रॉफीज़ का वीडियो बनाया था आप उसको देख सकते हैं. इट्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन. सो फ्रेंड्स, हियर द करेक्ट आंसर इज सी, इंडिया. इंडिया हैज़ रिसेंटली वॉन दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया. So India defeated Australia in the series by 2-1. So India won 2 matches and Australia only 1. So in the last match, Australia was defeated by 3 wickets at the Gabba Stadium. All right. Next is, in the recently released India Innovation Index 2020 ranking, which state has topped the list in major states category? So friends, this index is released by नीति आयोग. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नो इट. एंड ये लिस्ट जो है स्टेट्स को अरेंज करता है इन टर्म्स ऑफ देयर इनोवेशंस. ऑलराइट. सो हियर माय करेक्ट आंसर इज डी, कर्नाटका. सो कर्नाटका इस सेकेंड एडिशन ऑफ दिस रैंकिंग में भी नंबर 1 आया है और फर्स्ट एडिशन में भी कर्नाटका ही नंबर 1 था. सेकेंड रैंक आई है महाराष्ट्र की एंड थर्ड रैंक इज ऑफ तमिलनाडु. आई होप फ्रेंड्स दिस इज क्लियर. सो विल मूव फॉरवर्ड. हु ऑथर्ड द बुक द मेकिंग ऑफ आधार, world's largest identity platform? Friends, here the correct answer is T, Mr. Ram Sevak Sharma. आप इनको देख सकते हैं इमेज में. And he was the first Director General of UIDAI, which is the governing body of Aadhaar. Alright friends. So friends, now is the time for assignments. पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इंडियाज फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन टू रन ऑन पुश पुल टेक्नोलॉजी विल रन ऑन विच रूट? किस रूट पे वो पुश पुल टेक्नोलॉजी वाली राजधानी एक्सप्रेस रन करेगी? नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज हैज रीनेम्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन हावड़ा कलका मेल एक्सप्रेस एज. सो अब उस ट्रेन का नाम क्या है मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट, which of the following banks recently announced the launch of new mobile application called InstaFX? So friends, आप इन तीनों का आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, then I'll tell you what is the correct answer. So friends, thanks a lot for watching the video. I hope the session was insightful. और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है so please इस वीडियो को लाइक करिए, share it with your friends and subscribe to Novation for more such important videos on general awareness, business awareness and verbal ability. And I will again request you कि आप novation.in पर visit कीजिए. वहाँ पर आप कई सारे quizzes दे सकते हैं, आप वीडियो की PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप Novation को सपोर्ट कर सकते हैं. So friends, with that, I'll wish all the IIFT aspirants very good luck and I hope that आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. Alright friends, so with that, I'll close today's session and I'll meet you again next time. Until then, bye bye and please take care.